we understand about the nature of entrepreneurship. In today's class, we are going to understand that what are the various factors which are affecting the entrepreneurship. And for startup story, what we are going read today, that is on Dream 11. Okay. So I guess this is one of the interesting topics for you all. Basically, those who love cricket and who love sports. So for those, I think this is one of the interesting topics. So let's start with our basic. हम अपना topic करते हैं 1 minute. Okay, so let's start with it. So what are the various factors which influencing the entrepreneurship? Can anyone tell me that what can be the factors जो entrepreneurship को affect करता है? Anyone? जो बताएगा मुझे क्या-क्या factors हैं जो entrepreneurship को affect कर सकता है? Ma'am, personal factors, background, social, education background, family background. Very good. Very good. Bilkul. So today we are going to understand about it. The first very important factor, that is educational factor, right? So education is something which has helped you to develop your skills, the ideas, the creativity, the experience, what we are getting. Experience in education, when we are meeting multiple people, when we are meeting the classmates, when there is exchanging of the knowledge, then definitely somehow we can say that information which we are getting through the education, that is affecting the entrepreneurship. ठीक है? If we see that nowadays, अगर हम आज की बात करें तो हम देख सकते हैं कि entrepreneurial education पे बहुत ज्यादा इंडिया में फोकस हो रहा है. आपको पता होगा जो EDII है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैंने आप लोग को 4th सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, that was established in 1983. Do you know that it is not only an institute which is running and which is basically providing the PGDM on entrepreneurship, but somehow it impacting the whole area of the Gujarat. ठीक है? वहां पर बहुत सारे ऐसे आपके कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ नेसेसरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, और वहां पर जो गुजरात बोर्ड के बच्चे हैं, दे आर स्टडिंग इट इन द 11th एंड 12th क्लास एज वेल, राइट? तो स्कूल लेवल्स तक में भी इसको एंटर करवाया गया है एंटरप्रेन्योरशिप का. So education in entrepreneurship, and education is somehow which is affecting the overall skill and knowledge of the entrepreneur. What knowledge he got. See, entrepreneurship, या being an entrepreneur, it is not everyone's cup of tea. Everyone have no guts. सबके पास guts नहीं होता है कि वो कोई business start करे. But the education is something which will give you direction that you can start your business and how you can implement it, how you can take the actions, what can be the procedure. These skills we'll get through the entrepreneurial studies. ठीक है? So I guess this first point is clear to all of you. This is clear? First point? Yes, ma'am. Okay. Next one is legal. Next one is legal. तो एंटरप्रेन्योरशिप को कहीं ना कहीं आप देखिए तो एजुकेशन तो प्रमोट कर ही रहा है, साथ साथ में देयर आर सम लीगल प्रोटेक्शन व्हिच इज प्रोवाइडेड टू द एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है? द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट द वीक. अब देखिए, अगर कोई हम छोटी मोटी कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं और उसके लिए हमें मार्केट में compete करना पड़ता है, वैसे भी आपके बिजनेस से जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, सक्सेसफुल है, और ऐसे सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि हम compete नहीं कर पाते हैं. जब हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग मार्केट में ऑलरेडी देयर आर सो मेनी बिजनेस व्हिच इज very much capable than whatever we are selling, sometimes we are not able to compete with them and we are in the loss. So government is also taking initiative to protecting the businesses basically that which is weak in the initial stage when the company is in the growing phase or it is in the introductory phase. Sometimes the government is protecting them until that business is becoming stronger. ठीक है? तो एंटरप्रेन्योर्स जो स्मॉल सेक्टर के हैं, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जो लार्ज स्केल से compete नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए लीगल तरीके से गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि MSMEs जो हैं उसमें लिस्टेड जितने भी आइटम्स हैं दैट कैन बी ओनली प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल, मीडियम एंड द माइक्रो एंटरप्राइजेस. So in short, we can say that there is a legal
protection which is provided by the government for whom? For entrepreneurs, that they are able to protect the small entrepreneurs who are starting the business with the limited resources, right? As well as reservation system is there for product, and even they have also protecting the interest of the small scale entrepreneurs. So legal protection is somehow which is promoting and influencing the entrepreneurs or the person to start the business. Education is also thing that is providing you direction. It is enhancing your skill and it is contributing to make you an entrepreneur. Okay, so these two factors are clear to all of these two factors, everyone? Yes, ma'am. Okay. Next one is infrastructure. Okay. So land factory जो है, that is provided at the concessional rate, that an adequate supply of water, power, coal, and other sources of energies, transportation facilities, availability of wagons, supply of raw material, physical facilities, which should be provided by government to facilitate up the setting new business. So no doubt, without infrastructure, for example, if we are starting an industry, so we required a particular location in which we are able to run the industry. जहाँ पर हम industry जो है उसको run कर सकते हैं, चला सकते हैं, open कर सकते हैं. That is required, obviously. So infrastructural support should be provided by the government, like the adequate supply of the electricity, which is helpful for operation of the machinery, adequacy of the water, which is helpful for production, availability of the raw material should be provided by government if the location of the industry is in the difficult areas, as well as for protecting the interest of the new entrepreneurs or the or the person. Okay, so I guess this point is also clear that the infrastructure is also somehow contributing, and it is an important factor which affecting our decision to become an entrepreneur or affecting the whole system of entrepreneurship. Clear? Clear, everyone? Yes, ma'am. Okay, let's start with the next point. That is the institutional. That is institutional. Business plan करेंगे ना, is all about how you can start your own business. What is the first stage? And if you are purchasing an existing business, what you have to do? If you are starting the business from scratch, then what process you have to follow? I am going to tell you. Okay, but let's start with the basics and then we'll move toward it. Right? Chaliye. So the next one is institutional. Next point is institutional. So entrepreneurs need advice on the line of manufacture, which may be suitable source of raw material, like what kind of product you are going to produce. You have to take advice on the line of manufacture, that how you're going to manufacturing this product, what can be the source of raw material, and finance and other facilities. Okay, like the technical know-how, how you are going to deal with the tool and equipment. So these informations are required if you are in the manufacturing manufacture कर रहे हैं, जब आप manufacturing sector में हैं, so you have to take the advice on the line of the manufacturer, or which may be suitable, कौन suitable है, कैसे इसका source क्या होगा raw material का, finance facilities कहाँ से मिलेंगी, technical know-how, technical knowledge, and tool and equipment, etc. तो जो भी आपके entrepreneur हैं, they also need to know about the opportunities and threat to be their business. मतलब it's not about that they have to grab the opportunity and they are totally ignoring the risk and the threat. If you're starting the business, the threat is always associated with your business, which I already told you that there is a very dynamic business environment. ठीक है? तो आपका जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, फिर आपके जो डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक सीन है, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हैं, we have to ready to deal with these things, right? These are beyond the control of the business, and the business is not able to control the business, macro business environment. These are the technological changes, political instability, economic inflation or deflation situation, right? Changes in the demography, changes in the trends. ठीक है? The government regulations, we can say the legal environment.
So we have to ready to face both opportunity. We have to grab opportunity. We have to minimize the threat. So we have to ready for it, as well as the entrepreneur should show the concern that what are the how we can move toward the manufacturing system, what can be the line of the manufacturing, how the manufacturing is affected by the macro environment from the external environment, and what are the various factors, internal factors available, which is also going to affect the business, like the source of raw material, the finance, the technical knowledge, right? So the institution here is saying that how you're going to understand the way of manufacturing and what are the factors which is affecting the entrepreneurs. So entrepreneurs just need to always, the institution have to be established to keep the entrepreneurs informed about these matters. And there are so many institutes as well as the government के कुछ आपके देख लीजिए IIE हो गया, ADII हो गया आपका, NIESBUD, जो भी इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, they are all the time they are running the webinars ये हमेशा चलाते हैं. जैसे कोविड पैंडेमिक के टाइम पे भी they started running the webinars related with the Atmanirbhar approach, right? Related with the startups. So the institutes are always required to guide the entrepreneurs, give them advice on the line of the manufacturer, how they can take steps, what will be the right way of doing their business, how they will get this, what are the various sources of the raw material, how we can deal, what are the various factors which will in future affect our business, how we have to deal with it. So for this thing we require the knowledge or information, and these are something which is definitely happen. ये जरूर होगा. एजुकेशन जो है वो आपको एक स्किल देता है बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, और एक तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है या ये आपको एडवाइस देगा कि आप बिजनेस को कैसे रन करें, ठीक है, और किस तरीके से प्रॉब्लम को फेस करें, और अगर कोई अथॉरिटीज और गवर्नमेंट जो है जो इंटरवेन करेगी अगर आपके बिजनेस में, तो उनसे कैसे डील करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और लीगल फॉर्मेलिटीज को कैसे फुलफिल करें. सो दिस इज बेसिकली दीज एडवाइस आर गिवन बाय द इंस्टीट्यूशन. सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Institution, infrastructure, legal and educational. Clear? Yes, ma'am. Okay, next one is the financial. So in the finance हम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा था, याद है कुछ financial? Remember है कुछ याद है financial? What are the ways or modes of getting finance? Debt and equity. अच्छा वो NABARD ये सब वाला. Yes, ma'am. मैम एंजल फंडिंग हो गया. NABARD, this is a way of getting, मतलब that is a bank through which we are able to get the finance. Yes, the bank is one of banks, government, right? The self-financing system is there. You can take the finance from your friends, relatives. You can raise the fund from the angel investors. So there are multiple ways for getting the finance. So finance is something which is required for two things. First of all, when we are purchasing the fixed asset, we required to, मतलब जब हम कोई मशीन वगैरह परचेज कर रहे हैं या फिर हम ऑफिस परचेज कर रहे हैं, जब हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, so for that, for the initial capital or for the fixed capital, we required the finance, and for the working capital. Now the question is, what is working capital? So working capital which is required for the day-to-day activities and operation. जो day-to-day activities और operation है, उसके लिए जब हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो दैट कैपिटल इज वर्किंग कैपिटल. सो वी रिक्वायर्ड फाइनेंस फॉर द फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल. एंड आपको जब आप एक नए इंटरप्राइज होते हैं तो आपके इनिशियल स्टेज में पैसों की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज यू हैव टू सेटल योर बिजनेस, you have to do advertisement, you have to do the you have to purchase the location, you have to purchase the machineries, you have to hire the people. So you have a multiple expense when you are starting the business. So if there is a lack of financial resource, then definitely it is going to affect the entrepreneurial decision. आप कोई भी decision को properly नहीं ले पाएंगे. अगर आपको promotion करना है तो आप एक better strategy promotion का use नहीं कर सकते हैं. तो जो आपके lack जो है financial resources की कमी कहीं ना कहीं entrepreneurial decision और एक नए startup पे बहुत ही worst effect डालती है. तो जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर आप कोई डेवलपिंग कंट्रीज में हैं और यहाँ पर where the business and industry how to put
with the underdeveloped capital market. So अगर आप acute problem में तब आ जाएंगे जब आप एक developing country में है जहां पर आपका जो business और industry है which is put up to underdeveloped, मतलब बहुत ही ज्यादा worse capital market में जब आप फंस जाएंगे तो this problem will be become more acute और this problem will become more serious. तो गवर्नमेंट जो है इन कंट्रीज में अंडर डेवलप्ड जो कैपिटल मार्केट वाला सिचुएशन है तो ये इसमें ना आए तो गवर्नमेंट क्या करती है, द गवर्नमेंट इन दीज कंट्रीज शुड सी दैट कैपिटल मार्केट इज डेवलप्ड एंड नेवर न्यूअर एंड इनोवेशन capital market instrument will be stronger financial institution. So they want to promote the new capital market. They never want कि उनका जो capital market है वो underdeveloped हो जाए या worse situation में चला जाए. As well as the financial crisis is also one of the factor which is affecting the entrepreneurial decision. Like that financial crisis was once occur in 2008. 2008 में एक बार financial crisis आया था बहुत बुरा. So financial crisis here, it is not talking about that what from where we'll get the finance, but they are talking about that finance is also directly affecting the entrepreneurial decision and it is affecting the entrepreneurs. ठीक है? Because somehow if you are starting a business, you are in a high finance risk, and if your अगर आपका underdeveloped market में अगर आपके पैसे हैं and market में development नहीं हो रहा है तो in that situation you will face the financial crisis. So government is always try to regulate that the capital market जो है उनका वो develop रहे ना कि वो underdeveloped रहे. So I guess this point is clear. Clear? Everyone? Yes, ma'am. Okay. चलो. So next point is procedural. Procedural. Next point is procedural. Procedural. आंखों पे लाइट जल रहा मेरे. चलिए. Next one is procedural. So right, procedural क्या होता है? तो जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, ऑफिसेस का, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बहुत ही बड़ा हिंड्रेंस है. Like if you want to start a business, you have to do the documentation work. So you have to visit to the government offices, you have to visit the registrar offices multiple times, right? Sometime if you are starting the industries, sometime you have to take the industrial license. You have to face so many financial institutions for raising the fund. You have to visit the banks and all. Okay, so sometimes they are become very much biggest hindrance. What is the meaning of hindrance? Rukavat. Biggest hindrance to growth of the new enterprises because they are not working properly. That is the truth. Okay. So entrepreneurs have to run different jobs. Like one day he have to visit the government office, one day he have to visit the financial institution because they have to do the documentation. What I told you that if you are starting a business in any of the country, you have to comply all the laws and policies, whatever is set by that country, set by that government or in that country, whatever rules and policies are. So the entrepreneurs they have to run to the complete their work, they have to run to different job and हर एक offices में government offices में अलग अलग काम के लिए आपको visit करना पड़ सकता है और एक दिन में आपको हर एक काम पूरा हो जाए ये भी possible नहीं है. You have to follow the several laws, rules and regulations. So it would be better, ये बेहतर होगा अगर आप potential और existing entrepreneur हैं और जो नंबर ऑफ प्रोसीजर और लीगल रिस्ट्रिक्शन एंटरप्रेन्योर का है अगर वो रिड्यूस कर दिया जाए. सो इट इज अ बेसिकली वी कैन से इट इज अ डिमांड ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स दैट इफ the country want to promote the entrepreneurship, the legal requirement and the formalities should be reduced because somehow the entrepreneurs are very much demotivated in the initial stage if they are starting the business because they have to fulfill the formalities, they have to visit the offices multiple times and in one go never the work is completed. Okay, like if you are going for the documentation or for the verification of your location or for any of the thing, like you are visiting the municipal corporation of that area, if you are visiting that place, it is not necessary that the work will be completed within one day. It might be possible that you have to take the follow up again and again and it is going to take 1 month, 15 days or sometime if you are visiting at the lunch hour, they are not going to even entertain you in that situation. So this is the additional point which I basically given you.
ये मैंने आपको एडिशनल पॉइंट बताया है, लेकिन दैट इज द ट्रुथ, दैट इज द फैक्ट, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप एंटरप्रेन्योर के पोटेंशियल और आप एंटरप्रेन्योर्स के नंबर अपने कंट्री में इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इट इज बेटर टू रिड्यूस द प्रोसीजरल एंड लीगल रिस्ट्रिक्शन विच एंटरप्रेन्योर्स आर फेसिंग, because somehow the administrative mechanism is very poor in some country. It's either, we can take the example of India as well. So somehow the requirements and need of the entrepreneurs will basically deprived because of following all these policies and regulations. तो आपके जो प्रोसीजर्स हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो जो आप प्रोसीजर जिसको आपको फुलफिल करना पड़ता है, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसीजर, लाइक स्टार्टिंग अ बिजनेस यू हैव टू मेक द बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट प्लानिंग, हायरिंग एंड ऑल, सो these things are totally related with the business only. But if we are talking about the other legal formalities, like how you're establishing the business, you have to move toward the government के जो procedures हैं उसके तरफ आपको move on करना पड़ सकता है. So that procedure is a hectic, as well as that is one of the hindrance. So government, if they want to promote the entrepreneurship, what they can do, they can reduce some restriction. I'm not saying that they have to free the person from all the restriction. Somehow the people will start taking advantage of that. So we don't need to do it. But what we can do, we can make the administrative mechanism little bit faster, as well as we can reduce some legal restrictions and formalities which is additional and which is duplicating. मतलब कुछ duplication अगर चल रहा है काम में, तो just try to reduce it and make the administrative system little bit faster. So that's how it is helpful for the entrepreneurs to do their work smoothly, and the stress level of those people, the demotivation, somehow that will be reduced. So procedure is also one of the factor which is affecting the entrepreneurship. This point is clear? This point here to all of you? Yes, ma'am. Okay. चलिए, next one is communicational. So communication, so the information gap है that pushes many entrepreneurial ventures toward extinction. So communication, what does it mean? The sending the information, the exchanging of the information or messages within the parties, that is communication. तो कई बार कुछ इंफॉर्मेशन गैप हैं जो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर को उन्होंने बिल्कुल एक्सटिंक्ट के केस में वो लेकर आए. एक्सटिंक्शन मतलब जो चीज एकदम खत्म होने वाला है, ठीक है, गायब होने वाला है, एक्सटिंक्शन हो चुका है. Unless an entrepreneur knows about the market potential, competition in the market, technological and other development, जो आपके entrepreneurs हैं, जो आप बोल सकते हैं entrepreneurs जो हैं, they are knows about, जो जानते हैं market potential के बारे में. जब तक नहीं जानते हैं मार्केट पोटेंशियल के बारे में, टेक्नोलॉजिकल के बारे में, अनलेस इज समथिंग रिलेटेड विद, जब तक वो नहीं जानते, अनलेस एन एंटरप्रेन्योर जो है वो नहीं रहे इसके मार्केट पोटेंशियल के बारे में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में, कभी भी कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो सक्सीड नहीं हो सकता, कभी भी उसका वेंचर जो है वो सक्सीड नहीं हो सकता अनलेस एन एंटरप्रेन्योर नोज अबाउट द मार्केट पोटेंशियल, मार्केट नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. तो जो एंटरप्रेन्योर है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, दे हैव टू प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड. ठीक है, तो व्हाट दे आर बेसिकली डूइंग, दे आर हेल्पिंग इन कम्युनिकेशन. सो व्हाट द गवर्नमेंट नीड टू डू, like if there is any changes which is related with the technology, that information should be provided to the concern or to the entrepreneur. Okay, that should be by the news, that should be by the journals, that can be in the social media. The organization or the business consultant who are also who is consulting with the entrepreneurs about the business, they can also give the information. So the communication is one of the integral part or the important part to make the entrepreneur successful, right? तो सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके एंटरप्रेन्योर की, मतलब एंटरप्रेन्योर को कम्युनिकेशन मतलब एक गैप जो होता है, जो आपको बिल्कुल मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, so that communication should be there, right? If you want to make your venture successful, तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, you have to communicate with the market and market have to communicate with the potential entrepreneur. ठीक है, so information can be given from the government side,
The information can be provided by the companies, the existing companies, they are also providing the information. The information is also provided by the organizations of the entrepreneurs. So I guess this point is clear to all of you. The communication का समझ आ गया सबको, everyone? This point is clear? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next one is information technology and communication. Next point is information technology and communication. Just wait for me. Okay, chale. Next one is information technology and communication. Information technology and communication. So it's about that modern technology like IT, information technology. What is information technology? Is basically taking the data, storing the data, converting the data into the information, important relevant information. So this is the basically part of the information technology. So modern technology की अगर हम बात करें, information technology खासकर IT, जितने भी software development, these are the part of the information technology. They actual entered हो चुके हैं आप हमारे human के life में for day to day मतलब life में that is already entered. Faster mode of communication through the email, networking की बात करें, web technology related with the internet, that already revolutionized the industrial scene. ठीक है? So what we can understand that the management process जो है, whatever considerable जो भी changes होनी चाहिए, like if you are running an entrepreneur मतलब startup अगर आप run कर रहे हैं, so if you are not working with the latest technology, if you are still dependent on the conventional one, somehow it is affect your business. Like if there is nowadays, if we have to communicate, we have a multiple social media platforms through which we are communicating, through which we are sending the messages. But if in the formal way, if we're talking about, then the emails are the better option. So utilization of emails, utilization of the networking, web technology, these are important factors, or these are important things which is required by the entrepreneurs, and for what? For decision making and for the implementation of it, right? So information technology, and communication, I don't know why they wrote the communicational in the different way, but this is the part of the IT, information technology and communication. Next one is the rapid changes. If you are talk about the rapid changes, then the networking जो आजकल industries में है, outside industry है, that is increased in many fold. ठीक है? जो आपका information available है resource वगैरह का, that bringing changes in the industry, and industry जो है वो बहुत fastly change हो रहा है. So the changes in the industry's patterns and the structure, that is also affecting the entrepreneurship. Now the large size. So what they are talking about, that in the increase in the automation and the introduction of the computerized production nowadays, we are able to see that in the clothes even there are the digital printing. ठीक है? So the considerable increase जो हो रहा है आपके automation में, और introduction जो हो रहा है आपके computerized computerized production का, और process जो है industries के, so that is very much controllable. So यहाँ पर goods और geographical जो reach है, that is bringing large size of industries and services. So in short, we can say that the industries are becoming large because of the way of the, बोल सकते हैं ना कि because of the automation and because of the introduction of the computerization, we are able to produce a large, right? So that's why the business, whatever is nowadays is started, that is the large size business. True. So size somehow it have a benefit of the economies of scale. Okay, who is going to tell me what is the meaning of economies of scale? मैम इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम लोग मास प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण पर कॉस्ट आइटम का डिक्रीज कर जाता है, और सेल्स वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण प्रॉफिट होता है. So basically जो आपका economies of scale है, गुड नमन, economies of scale का मतलब क्या होता है कि when you are producing a lot, means अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, then per unit cost जो है उसका लो इसलिए हो जाता है क्योंकि because of the skill and because of a reduction in the waste of the resources and optimum utilization of resources. मतलब जब आप एक्सपर्टीज हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि आप उसी प्रोडक्ट को बनाने में कम टाइम लेते हैं, ये भी एक रीजन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, और एक्सपर्टीज की वजह से आप जो प्रोडक्ट उसको फास्टली बनाना शुरू कर देते हैं.
ठीक है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से क्या होता है, पर कॉस्ट आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट, इन शॉर्ट पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो लार्ज साइज का मतलब ये है कि the size of the business is affecting the cost as well as on the entrepreneurship it is affecting overall effect। क्या होता है कि जो लार्ज साइज के जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, दे basically reach the economies of scale very soon, so they will be in the profitable sector, so that's why they are saying about it. Research and technology, I guess this point is, I don't need to elaborate it. R&D technology is also one of the factor affecting the entrepreneurship. Stakeholders also affecting, and globalization. Globalization तो समझ में आ ही गया होगा कि now there is an open economy and open environment. So there is a no geographical boundary, so that competition is very intense. So for surviving in the market, you have to provide the better quality, delivery of the product, and all these things. मतलब competition के लिए globalization is important. Okay, so I guess this point is clear to all of you. Clear हो गया है? Yes, ma'am. समझ में आ गया सारे factors. Let's start with our today's successful story of Dream 11. Okay, so anyone have any doubt in factors influencing the entrepreneurship? The first one is educational, second one is legal, third one is infrastructure, fourth one is institutional, fifth one is financial, next one is procedural, communicational, R&D, rapid changes, size of the business, stakeholders, and globalization. So these are the factors which are affecting the entrepreneurship, right? Okay, let's move toward our today's success story of Dream 11. So I'm sharing the screen. Okay. So you all are able to see? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? Yes, ma'am. अब दिख रहा है। दिख रहा है मैम अब। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पहले बताओ मुझे, how many of you already know about this Dream 11? देवराज। What about the others? देवराज के अलावा और कोई, क्या मतलब स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या किसी को? मैम पता है क्या है पर इंटरेस्ट नहीं। What about the others? Okay, so Devraj, you raised the hand. Okay, Piyush को भी है interest, मतलब he knows about Dream 11. So Devraj, tell me how the Dream 11 is working. मैम ड्रीम 11 एक मैम ऐप है जो कि मैम एक तरह से सट्टेबाजी पे काम करता है मैम। एक तरह से अपकमिंग जो मैचेस होते हैं उनके प्लेयर्स को मतलब कॉन्टेस्ट किया जाता है और उनके ऊपर पॉइंट्स लगा के एक टीम बनाया जाता है, और जैसा मतलब जो मैच हुआ और उन्होंने जो टीम बनाया अगर वो मैच करता है तो वो पूरे मतलब उस हिसाब से प्राइजेस जीतते हैं। मैम कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए फीस भी लगता है, कुछ पैसा लगता है, अमाउंट यू हैव टू पे। यस, बिल्कुल। तो द ड्रीम 11 जो है, इट इज अ बेसिकली एक बोल सकते हैं फैंटेसी गेम्स की कंपनी है, जहां पर दिस वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड। रियलिस्टिक जो आपके मैचेस चल रहे होते हैं उसमें आपको बेटिंग करता है, जिसको हम सट्टेबाजी हिंदी में कहते हैं, जो देवराज ने बताया। तो यहाँ पर वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द बेटिंग करना पड़ता है। अगर आपका मैच जीत गया, पर्टिकुलर जो टीम जो भी आपने बनाया, अगर उसने मैच जीत लिया और उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से whatever मनी, जो भी मनी आप लगाते हो, और मिनिमम इसका अमाउंट है 100 रुपीज, 100 रुपए से यू कैन स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम, एंड मैक्सिमम आई गेस दैट इज 2 लाख रुपीज अराउंड। सो जैसा जितना पैसा लगाओगे, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस होगा, उस हिसाब से यू विल गेट इन रिटर्न। ठीक है, हाँ, लेकिन कई बार जब आपका रिटर्न हाई होता है तो उसमें ये 20 to 30% कमीशन भी रख लेते हैं। देवराज, हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा? यस मैम, हुआ है। So let's start with, this is the basic of the Dream 11 कि आखिर Dream 11 है क्या? So it is a basically an application or it is a map through which you can earn the money. So it is real money earn करने का. You will not get the digital money, but you will get the real money while playing this game. Okay, so let's start with the story. So जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है वो आजकल की जो यंग जनरेशन है, दे आर वेरी मच क्रेजी टुवर्ड इट, राइट? फैंटेसी स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो ये आपको ये नहीं कहता है कि इफ यू लव स्पोर्ट्स तो एक स्पेक्टेटर की तरह से भी इसको देखिए, बट यू कैन बेसिकली अर्न थ्रू इट। ठीक है,
So but you can even create the imaginary team if you want of the real players, and what you can according to their own choice, मतलब अपने हिसाब से आप चॉइस बनाइए, चॉइस देखिए, अपने चूज कीजिए प्लेयर्स को, और आप रिवॉर्ड भी अर्न कर सकते हैं बाय द इमेजिनरी टीम अगर उन्होंने अच्छा गेम खेला तो, ठीक है। एंड दिस इज whom we need to be thankful, so mobile and internet revolution, ठीक है। So because of that only the fantasy gaming industry is booming in India, and even I know that when you will open the social media, either you will start watching anything in YouTube, you are able to see the advertisement of these kinds of games, है कि नहीं? देखते हो ना, बहुत सारे गेम्स के एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं हमेशा। ड्रीम 11 का भी आता है, आपका 3 पत्ती पता नहीं इसका भी आता रहता है ऑल द टाइम, ठीक है। सो दीज आर द रियलिस्टिक गेम्स है, यहाँ पर आपको पैसा सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बट यू कैन अर्न द मनी थ्रू इट। एंड फ्रॉम दिस ड्रीम 11 वाज स्टार्टेड, हु बेसिकली फाउंडेड दिस? So the Dream 11, it is founded in 2008 by two young talented co-founders, Harsh Jain और भावित सेठ, ठीक है। Basically we can say that these two person are the pioneer in the fantasy game segment, means they are the first person who initially started this kind of fantasy game system in India, so that's why they are saying as the pioneer, okay। और Dream 11 इंडिया का फर्स्ट ऐसा गेमिंग कंपनी है जो एंटर हुआ यूनिकॉर्न क्लब में, ठीक है। एंड हाउ दिस जर्नी इज स्टार्टेड, लेट मी टॉक अबाउट इट। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज कंपनीज हाईलाइट व्हाट इट इज। तो अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, से मुंबई बेस्ड आपकी ये जो कंपनी है। फाउंडर्स कौन है? हर्ष जैन और भावित सेठ। इंडस्ट्री कौन सा है? फैंटेसी गेम। 2008 में इट वाज फाउंडेड। टोटल फंडिंग क्या है इसकी? $1.62 billion in November 2021. So this is some basic information. Let me talk about the founders and the team. These two persons, the Bhavit Seth and Harsh Jain, these are two persons. Let me talk about the Harsh Jain. He is the co-founder and CEO, Chief Executive Officer of Dream 11. ये जो है, he graduated from University of Pennsylvania with MBA from Columbia Business College School. So they did his graduation and MBA from foreign country. And Dream 11 से पहले भी इन्होंने एक लॉन्च किया था सक्सेसफुली, एक लेड द एक्विजिशन ऑफ रेड डिजिटल। रेड डिजिटल नाम की कंपनी इन्होंने एक्वायर किया था, एक्विजिशन किया था, मतलब लॉन्च किया था, ठीक है। भावित सेठ जो है, ही इज द को फाउंडर एंड ही इज द सीईओ। अच्छा, सीईओ कौन होता है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। तो जो हर्ष जैन है, जो आपके सेठ हैं, ही इज अ सीओओ, और इन्होंने इंजीनियरिंग की है और वो भी एमबीए भी किया है। तो इंजीनियरिंग और एमबीए किया है इन्होंने बेंटले यूनिवर्सिटी बॉस्टन यूएसए से इन्होंने पढ़ाई की है अपनी, और इन्होंने बाद में डिप्लोमा किया है इन ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी, मतलब ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी में ही डिड डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम हार्वर्ड। तो हार्वर्ड से इन्होंने ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी में डिप्लोमा भी किया है। और भावित जो है वो हर्ष के साथ दोनों जो थे, दे बोथ पर को-फाउंड, मतलब दे बोथ फाउंडेड Dream 11 in 2008, ठीक है। So as a COO, मतलब he is basically focusing on the operating system, so इनका फोकस इसी चीज पे है, ऑपरेशनल एक्सेलेंस होना चाहिए आपके कंपनी का, प्रोसेसेस प्रॉपर होने चाहिए। तो भावित सेठ इज बेसिकली फोकसिंग ऑन दैट। तो Dream 11 की जो पेरेंट कंपनी है, दैट इज ड्रीम स्पोर्ट्स। So Dream Sports is a parent company. Okay, I am just going to ask a important question. Zomato की parent company कौन सी है? मैम नहीं पता। Anyone else? Zomato की parent company किसको पता है कौन सी है? Zomato Limited. Zomato खुद ही उसकी parent company है, तभी तो अभी IPO आया था। बता, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा, बेसिक से क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तुम लोगों को। चलिए, तो ड्रीम स्पोर्ट्स जो है, दैट इज द कंपनी, और इसका कुछ पोर्टफोलियो है, इंक्लूड्स ब्रांड इंक्लूडिंग ड्रीम 11 है, फैन कोड है, ड्रीम एक्स है, मतलब ये एक तरीके से इनका पोर्टफोलियो है। दीज आर सम को ब्रांड्स इन अंडर द ड्रीम 11। ड्रीम पे है। अब ड्रीम 11 की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, हाउ इट वाज स्टार्टेड। तो हर्ष जैन और भावित सेठ जो है, वो बचपन से उनको गेम बहुत पसंद था। तुम लोग में से कितने लोगों को गेम बहुत पसंद है? नमन का मुझे पता है इसको पसंद है।
What about the Yes. others? What about the others? बलराम, मैम फोन पे खेलने वाला गेम या आउटडोर गेम? दोनों गेम। मैम मुझे आउटडोर पसंद है, मैं फोन पे नहीं खेलता हूँ। गुड, so he is from 90s. चलिए ओके, सो हिस्ट्री इसकी शुरू करते हैं, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज, मतलब आई ऑल्सो फॉन्ड गेम अ लॉट. I was athlete in my school. I got so many prizes when I was in school. Once I chose for the state level athlete, but unfortunately something happened. Chalo. So let me start with this history and how it was started. So हर्ष जैन और भावित सेठ जो थे, बचपन से उनको गेम्स बहुत पसंद था, and they basically they took the benefit of this potential that there was the booming sector, मतलब boom हो रहा था आपका इंटरनेट जो सर्विसेज थे, तो he basically took the benefit of that. He tapped the potential market, untapped potential market. अच्छा, untapped potential market पता है क्या होता है? Untapped potential market का मतलब ये होता है कि जब आप मार्केट में पोटेंशियल प्रेजेंट है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए लोग प्रेजेंट नहीं है, तो अनटैप्ड पोटेंशियल मार्केट को इन्होंने उसको ग्रैब किया. और इनका ये जो का पूरा जो बोल सकते हैं ना कि जो आइडिया था, दैट वाज सपोर्टेड बाय द इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको हम आईपीएल कहते हैं. ठीक है, अगर हम कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में तो बिलियंस हैं जो क्रिकेट फैन है. सही बात है ना, क्रिकेट सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, इंक्लूडिंग मी. तो एवरीवन लाइक्स क्रिकेट. तो हर्ष और भावित ने इस तरीके के, इसीलिए इन्होंने ये चीज सोचा कि हमें एक ऐसा कंपनी बिल्ड करना है जो स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग के साथ साथ प्रॉफिटेबल सर्विस भी प्रोवाइड करे, मतलब लोग जो ऐसे प्रॉफिट भी अर्न करें. तो ऑब्वियसली इट इज वर्किंग ऑन बेटिंग. सो जब हर्ष ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली यूनिवर्सिटी से, देन ही रिटर्न बैक टू इंडिया एंड ही वांट टू सॉल्व द फैंटेसी गेम प्रॉब्लम जो था, वो सॉल्व करना चाहते थे. एंड इसके लिए इन्होंने अपने बहुत सारे नोन को इनवाइट किया कि चलिए इस पे कुछ बात किया जाए. बहुत लोग इनसे हंसे, क्रिटिसाइज किया इनको, लेकिन हर्ष का सिर्फ एक फ्रेंड था जो कॉलेज, वो हर्ष कॉलेज का क्लासमेट था, भावित सेठ. ठीक है, उसने डिसाइड किया कि ये लार्जर पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए. और इसके बाद 2012 में जब कंपनी आया तो इट वाज प्रोवाइडेड हिज फर्स्ट प्रीमियम सर्विस, मतलब प्रीमियम सर्विस के साथ इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की. ठीक है, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स वगैरह को भी इनवाइट किया टू ज्वाइन देयर वेंचर. If we'll talk about the mission, so what basically mission, vision क्या है इनका? To make the fantasy sports a part of every sports life. So their target person are the person who basically loves sports. He is not focusing on those people who don't love sports, because जिनको sports से पसंद ही नहीं है, तो he or she is not interested in these kind of apps, right? So their vision, किस चीज से विजन है कि जो they want to make एक fantasy sports ये बनाना चाहते हैं, मतलब उनका विजन था कि हमको ऐसा फैंटेसी स्पोर्ट्स बनाए जो कि हर एक स्पोर्ट्स फैन के लाइफ का पार्ट बन जाए. ठीक है, एंड that's how they basically started this business. If we'll talk about the name, tagline and logo, जो आपका ड्रीम 11 है, that was basically यहाँ पर आपका सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड चीजें नहीं है, फुटबॉल भी है, कबड्डी भी है. नाउ these are the part of the ड्रीम 11. ठीक है, एंड इसके लिए आपका वही चीज है कि बोथ क्रिकेट और जो फुटबॉल है, इसमें ये पॉपुलर है अक्रॉस द ग्लोब, मतलब इंडिया से बाहर भी लोग इसको गेम खेल रहे हैं. एंड ऑल ऑफ देम हैव 11 प्लेयर्स मैंडेटेड फॉर एनी लाइव गेम, मतलब लाइव गेम के लिए कम से कम 11 प्लेयर ऑब्वियसली होने चाहिए. ठीक है, तो ड्रीम 11 जो है, इट वाज रियली लॉन्च अ सीरीज ऑफ रिसेंट कैंपेन, बहुत सारे कैंपेन्स इन्होंने शुरू किया. एंड दे यूज द टैगलाइन दैट इज टीम है तो मजा है, and they translated it into English as well. And if there is a team, then there is a fun. So basically they translated it into English as well. What is the Dream 11 target market? So if we are talking about the online gaming sector, their target market, इनका age group है ना, that is 20 to 35 years. So इनका focus age यही है, 25 to 35 years. ठीक है, उसके अलावा इनका बिजनेस मॉडल है, वो कैसे काम करता है? तो देयर बिजनेस मॉडल इज बेसिकली गेटिंग द प्रॉफिट बाय होस्टिंग फैंटेसी गेम ऑन देयर वेबसाइट. ठीक है, उसके अलावा दे आर टेकिंग द 20% ऑफ टोटल अमाउंट अर्न इन द ग्रैंड और स्मॉल लीग. तो दे आर टेकिंग द 20% फी
एंड इनका जो गेमिंग मेथड है वो 3 तरीके से चलता है, फ्रीमियम, प्रीमियम एंड प्राइवेट। ठीक है, रेवेन्यू मॉडल की बात की जाए तो ये कहाँ से पैसे कमाते हैं, इनका कहाँ से पैसे आ रहे हैं इनके पास। तो फर्स्ट थिंग दैट एंट्री लेवल फी, पार्टिसिपेंट से पेड कॉन्टेस्ट होता है जहां पर पैसे लगते हैं, तो वो एंट्री फी के थ्रू ये पैसा कमा रहे हैं। उसके अलावा दे आर ऑल्सो टेकिंग द 15 to 20% ऑफ द, मैंने बोला कि ड्रीम 11 टेक इट कट विद द काउंट ऑफ 15 to 20% ऑफ टोटल पुल, जितना पैसा बना उसे 15 से 20% पैसे ले भी लेते हैं। तो दिस इज द वे दे आर अर्निंग द मनी। What challenges and hurdles they face? So that is a startup challenges. It is not about the Dream 11 face it, but so many companies face this. Roll number 7, batch 1. Roll number 7, batch 1. Will you stop doing this? Batch 1, roll number 7. Getting through the legal obstacles, definitely, because it is totally based on the betting system. तो बेटिंग सिस्टम पे पूरा डिपेंडेंट था, तो लीगल ऑब्स्टिकल्स तो आना ही था, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको इस तरीके से पब्लिक के पैसे को मिसयूज करने नहीं देगी किसी कोई भी बेटिंग सिस्टम पे। तो इसके लिए ड्रीम 11 ने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्लोज कर रखे हैं। लाइक इफ यू वांट टू प्ले, इट इज टोटली व्हाटएवर रिस्क इज देयर, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, देयर इज नथिंग व्हिच इज हाइड। ठीक है, so there is a legal obstacles which this Dream 11 faced. उसके अलावा locating a business market, so it is difficult if you are your company is startup and you are basically work with the betting system, so you have to locate in the business market, marketing the company and explaining about the company, that how it is working. It is a difficult task which the company faced. Fixing the office location, that where they can start their work, office location, as well as implementing and appropriating the technology, because it is totally internet based app hai aapka, so it required the appropriate technology for it. So there are few challenges which is here, right? So who are the funding मतलब funding और इनका investors कौन है? So their investors are DST Global, Tiger Global and Redbird Capital. Yes, Naman. मैम, इंडिया में एक एक्ट है जिसको कहते हैं पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। उसमें कहा गया है कि जितने भी गैम्बलिंग या बेटिंग है किसी भी स्पोर्ट्स पे ये इलीगल है एक्सेप्ट हॉर्स राइडिंग। तो ये ड्रीम 11 तो उस एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये लीगल कैसे है? नो, इट्स नॉट अबाउट इट। आपने अमेंडमेंट नहीं पढ़ा होगा, अमेंडमेंट देख लीजिए उसका एक बार। और दूसरी चीज है कि जब आप कोई भी, जैसे एग्जांपल में, आई एम नॉट प्रोमोटिंग, सी आई एम नॉट सेइंग पर्सनली, बट इफ यू आर एबल टू सी दैट देयर इज अगर आप जो है आप किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट टोबैको के लिए नहीं कर सकते हैं नहीं, इट इज इलीगल। ठीक है, लेकिन यू कैन सेल इट, है ना? तो दैट इज, इसमें एक चीज लिखा होता है कि लाइक इफ यू आर रिस्किंग योर लाइफ, अगर आपके हेल्थ के लिए हैजर्डस है, दैट सेम नोटिस एंड नोटिफिकेशन इज प्रोवाइडेड इन Dream 11. What I earlier told you, that they are not disclosing the thing, they are not enclosing the thing, but they are disclosing the thing. Like if you are going to pay this amount can be lost if they are not able to perform well. So this is totally based on the transparency system. ठीक है, and there are so many amendments which is made on the gambling act, you can see it once. ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि it is not contradicting. ठीक है, Okay, ma'am. I will tell you about those acts as well, that which is saying that you are allowed to run such kind of business, but you have to follow the terms and conditions. So that is not, this type of business required what we can say, required permission from the government, no doubt. So they are fulfilling all the government requirements, and after that we are able to run this kind of business. ठीक है? Okay, ma'am. So there is a risk which is there, and that will be disclosed, and you have to play safely, and it's totally up to you. ठीक है? So this is a total story of the Dream 11. So anyone have any doubt? कुछ समझ ना आया हो? अच्छा, तो ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं टॉपिक, और आपका कोई नया सक्सेस स्टोरी देखेंगे। ठीक है, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट